Assalamu alaikum and welcome, dear students. I hope you are hale and hearty. Today, I would like to discuss with you skimming, scanning, intensive and extensive reading. First, I will discuss about types of reading. Then I'll be talking about kinds of reading. Types of reading, oral and silent. So, बुनियादी तौर पर रीडिंग की दो इकसाम हैं. ओरल रीडिंग क्या है कि व्हेन वी रीड अलाउड, जब हम आवाज़ बुलंद पढ़ते हैं तो दिस इज़ ओरल रीडिंग, एंड व्हेन वी रीड क्वाइटली दिस इज़ कॉल्ड साइलेंट रीडिंग. और जब हम खामोशी से पढ़ते हैं तो ऐसी रीडिंग को हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रीडिंग? So broadly speaking, there are four basic kinds of reading: skimming, scanning, intensive reading, and extensive reading. So let's have a look one by one. Skimming. Skimming is used to quickly gather the most important information or gist. Run your eyes over the text, noting important information. It is not essential to understand each word when skimming. When we read news in a newspaper, we use this technique. We do not read the whole news word to word, we just cast a glance to take the main idea. So skimming से मुराद क्या है कि जब कभी हम जल्दी पढ़ते हैं और उससे हम ख़ास मफ़हूम या ख़ुलासा हासिल करना चाहते हैं, कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम स्किमिंग रीडिंग करते हैं. और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है अखबार का पढ़ना, कि जब कभी हम अखबार पढ़ते हैं तो हम सारा अखबार नहीं पढ़ते, बल्कि जो हमारी दिलचस्पी की खबरें होती हैं हम सिर्फ उनको पढ़ते हैं. सो देर आर अदर एग्जाम्पल्स like newspapers, magazines, business and travel brochures. So when we go through them, we have skimming reading. Scanning. It is used to find a particular piece of information. Run your eyes over the text looking for specific piece of information you need. When we search for the meaning of an unfamiliar word in a dictionary, we use this technique. We have specific information in our mind. We trace it out in some source. This is called scanning. अगर हम स्कैनिंग की बात करें तो जैसा कि स्किमिंग में हम ओवरऑल ख़ास चीज़ें पढ़ के एक आइडिया लेते हैं, स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, हम कोई ख़ास मालूमात की तरफ जाते हैं कि वो मालूमात जो हमें रिक्वायर्ड हो. और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है कि जब कभी हम डिक्शनरी में कोई ख़ास लफ्ज़ देखना चाहते हैं तो वो हम स्पेसिफिक वर्ड के लिए जब तलाश करते हैं, जब रीड आउट करते हैं, तो इसे हम स्कैन करना बोलते हैं. दिस इज़ स्कैनिंग. So there are some examples of scanning like TV program list, airplane schedule and meeting schedules. Intensive reading. It is close reading. It needs a great deal of attention. It needs time and effort. Its aim is the accuracy of comprehension. Student study of course books is almost of this kind. It is used on shorter text in order to extract specific information. Use intensive reading skills to grasp the details of a specific situation. In this case, it is important that you understand each word, number or fact. इंटेंसिव रीडिंग किसे कहते हैं कि जिसमें हम बिल्कुल गहराई से मुताला करते हैं. इस रीडिंग के लिए एक्यूरेसी दरकार है, और इसके लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारी कोर्स की किताबें, कि हमें अपने कोर्स की बुक को शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे तरीके से पढ़ना होता है. उसके एक एक वर्ड को, उसके एक एक फिगर को, नंबर को और फैक्ट को हमें अच्छे तरीके से समझना होता है. सो ऐसी रीडिंग को हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, और उसके एग्जांपल्स में हैं रिपोर्ट, इंश्योरेंस क्लेम और कॉन्ट्रैक्ट. जब कभी हम रिपोर्ट या इंश्योरेंस क्लेम या कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं तो उसको भी हम इंतहाई तवज्जो और बारीक बीनी से पढ़ते हैं. एक्सटेंसिव रीडिंग. Extensive reading is used to obtain a general understanding of a subject and includes reading longer texts for pleasure as well as business books. Use extensive reading skills to improve your general knowledge of business procedures. It is done mostly outside the classroom. When we read a long novel, we are reading extensively. We read the novel quickly. Our main purpose is to be entertained. Don't worry if you do not understand each word. एक्सटेंसिव रीडिंग से मुराद क्या है? इससे मुराद है कि हम जनरल अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए या लुत्फ़अंदोज़ी हासिल करने के लिए जो मुताला करते हैं, जैसे कि नावल पढ़ना या इसके अलावा बिज़नेस बुक्स वगैरह पढ़ना, ये सब उसी के ज़िम्मे में आता है. और
इसकी जो दीगर मिसालें हैं उनमें मार्केटिंग बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, जैसे कि अखबार में हम अपनी पसंद के कॉलम्स या आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ते हैं और मुख्तलिफ नावल्स वगैरह पढ़ते हैं, तो सब ये मिसालें हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की। सो देयर इज़ अ रीकैप। Skimming is used to quickly gather the most important information or gist. Scanning is used to find a particular piece of information. Intensive reading is close reading of shorter texts. Here we understand each word, number, or fact. Extensive reading is used to obtain a general understanding of a subject and includes reading longer texts for pleasure. सो अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में और नए मौजू के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।